Good morning to one and all students. This is your Maths 1 lecture and I am Riya Miss, your Maths 1 teacher. As I have given you all introduction in my last lecture, we saw face to face introduction. So I hope you all know me. Okay now. So we will start with our maths. We will have to know our maths also, right? So we will know our maths. How we will know? By starting its lesson. So today I am going to start with the third lesson, indices and cube root. Students, this is your maths 1 lesson. So you can mark it for your maths 1. Now students, indices and cube root. It's not like it is new for you. You have seen indices in your previous year. Last year you have seen indices lesson. So what all things were there in your last year in indices we will see now. Students, in earlier standards, you were taught the indices and laws of indices. Now we are going to solve sums based on indices in your standard 8. Students, let us quickly revise what you did in your 7th standard. Students, the first thing I will tell you is the product, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 2. This is known as a product form. 2 is multiplied here. So this is known as a product form. Product form looks like this. So students, it can be expressed as index form. 2 raised to 5. This is known as index form. Students, this product can be expressed as index form. How it will be expressed? How many times 2 is multiplied here? 5 times. So what they wrote? They wrote 2 and on top of that they wrote 5. So we will not call like this, they wrote 2 and on top of that they wrote 5. No, we will be using some specific words for it. For example, 2 is called as base. 2 is known as base and 5 is the index. So students, I will write and show you this thing. First I will write the lesson number. See, the way I am writing, you have to write it like that way. Lesson number 3. Indices and cube root. Okay students, so you wrote like this. Now what you have, now I am teaching you all, okay, this thing. Even if you don't write in your notebook, it's okay, but some of students, if they want to write, you can write. Why? Because this will be a revision for you all. You will find this lesson easy once you refer to the things. Now students, yes, we were talking about the product form. Product form we will write like this way. So I will write here product form. Product form is written as 2 into 2, 2 into 2 into 2. So what I did is I multiplied 2 5 times. This is known as product form. Now how I will write in the index form? Index form, we will call index as topi. Okay, we will be calling index as topi. So how we will write now index form? First of all, index form will be written as 2 raised to 5. Okay, so what we will be telling 2 as? 2 will become your base and 5 will become your index. So how you will understand teacher, हम confuse हो जाएंगे that how to take base, how to take index. इसलिए मैंने आपको बताया कि index को हम क्या नाम देंगे? टोपी. Now टोपी किधर रहती है? ऊपर रहती है, right? So 2 base है but टोपी अपनी क्या है? 5 है. So 5 को हम index बोलते हैं. You can call 5 as टोपी. I mean for your reference, do not call it like that, okay? For just your reference I am telling you that 5 becomes the index. Index क्या मतलब? टोपी. टोपी किधर रहती है? ऊपर. So that's why base is 2 and 5 is the index. Understood students? So now what we will see is the laws of indices. We will see the laws of indices. There are some laws, very good laws they have given by this mathematicians. Okay, so laws of indices tell us that m and n are the integers. See here students, pay attention here. I will be showing you a little closer view so that you can be able to see. Yes, so students, see this. Laws of indices. Okay, so what is given? M
and n are integers. They are giving us m and n are integers. Integers क्या रहते हैं? What are integers? Integers means all the negative plus positive numbers including zeros. So students, integers are those which consist of negative numbers also, positive numbers also, and zero also they consist. So in short, what we will say is integers are all the numbers. Okay, so m और n वो all numbers कोई भी रह सकता है. m negative रह सकता है, positive रह सकता है, n negative, positive, then zero also both can be. So students, like this way they have told m and n are the integers. Now we will see what is m and n. So first law is telling us a raised to m into a raised to n is equal to a m plus n. Now what is this, students? We will write here a raised to first law. Okay, first law is a raised to m into a raised to n, which is equal to a raised to m plus n. Students, abhi what is this? I will give you example. Okay, with numbers. This is a general form. I will give you example with a number. Consider 3 raised to 5 into 3 raised to 2. So students, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है 3 raised to 5 into 3 raised to 2, so what will be its answer? Its answer will be is equals to a. a क्या है? सेम है, a बेस है. अपना बेस इधर कौन सा है? Which is a base? 3 is a base. So 3 we will write here. Now m plus n, which is a m, students compare from here. टोपी कौन सी है? 5 है. यहाँ पे टोपी कौन सी है? 2 है. That means 5 and 2 are m plus n. So what we will do is 5 plus 2. Okay, now students, further what will be answer be? 5 plus 2, what it is? It is 7. So you got answer as 7. So like this way, students, using laws of indices you can solve some sums based on it. Now we will see the second law of indices. I will be writing here. Okay students, second law क्या बोलता है अपने को? Second law, here it is. A raised to m divided by a raised to n is equals to a raised to m minus n. Second law is also of the same type, but it is not same. It says that there is a division, that's why in the answer m minus n will come rather than m plus n. So students, see, a raised to m divided by a raised to n will be equal to a raised to m minus n. So student, ये माइनस कब आएगा? जब डिविजन रहेगा. प्लस कब आएगा? जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा. सो लाइक दिस वे यू हैव टू लर्न लाइक दिस वे. सो नाउ आई विल गिव यू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? 3 raised to 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to 9. अभी 3 raised to 7 डिवाइडेड बाय 3 raised to 9 बोला है. अभी इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हाउ वी विल डिवाइड दिस? वी विल डिवाइड दिस विद दिस लॉ. Directly what we will do is write 3 as it is, because it is it is a base. What is the m, students, from here? 7. What is the n, students, from here? 9. And what we have to do? Minus them. That's why 7 minus 9. So what will be our answer, students? It will be 3 raised to minus 2. Students, why minus 2? Bigger number sign. Understood, students, how it is solved? Okay, so you have to see the signs as well as bigger number sign you have to give it here. Okay students, now we will see the third law of indices. Third law, what is it? See it. A into b the whole raised to m is equals to a raised to m into b raised to m. What does this mean? See this, students. A into b the whole raised to m is equals to a raised to m into b raised to m. What does this means? This means that अगर एक होल ब्रैकेट में a और b मल्टीप्लाई करके उसकी टोपी जो है, दैट इज इंडेक्स, दैट इज m, सेम होगी, तो जब उसका आंसर आएगा, व्हेन इट्स आंसर विल कम, इट विल बी स्प्लिटेड टू बोथ लेटर्स लाइक दिस वे. a रेज टू m, a को भी m मिलेगा, b को भी m मिलेगा, क्योंकि वो होल ब्रैकेट क्या रिलाई करता है, क्या दिखाता है हम लोग को, कि वो साथ में है. a इंटू बी आर टुगेदर एंड उनकी टोपी साथ में है, इसलिए जब भी वो डिवाइड होगी, जब भी वो अलग होगी, तो उसकी टोपी हर एक को जाएगी. ओके, सो इट्स लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, दिस लॉ इज a इंटू बी the whole raised to m is equals to a raised to m into b raised to m. Now we will give one example. Example is that 3 into 4 the whole raised to say 2. Okay, so what it will be, students? It can be what? 3 raised to 2 into 4 raised to 2. Understood, students? So what it will be? It will be
3 square, you all know squares, right? 3 ka square 9 into 4 ka square 16. Now 16 nines are, you have to do and find the answer. So what it is, students, it is 144. So now you understood, have you got the answer here? So using these laws we have to solve. Now further we will see a fourth law. Okay, see students, fourth law states that, fourth law is very easy, that is if there is a raised to 0 then उसका आंसर आएगा 1 डायरेक्टली. मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, सिर्फ one number is given. Okay, fourth law I am telling, it is a raised to 0 is equals to, directly answer is 1. Now example देके बताती हूँ. a raised to 0 means what, I will take that 5 एक नंबर है जो a है और उसके ऊपर 0 दिया गया है. सो व्हाट इट आंसर विल बी स्टूडेंट, डायरेक्टली 1. कोई भी नंबर दिया गया है, 5 के जगह पे कोई भी नंबर दिया है लेकिन उसकी टोपी क्या है, 0 है, तो उसका आंसर आएगा 1. अंडरस्टूड स्टूडेंट, वॉट एवर योर नंबर इज गिवन, इट्स इंडेक्स इज 0, देन इट्स आंसर विल बी 1 स्टूडेंट. सो लेट्स सी नाउ फर्दर लॉ, दैट इज फिफ्थ लॉ. Fifth law says that, pay attention here student, a raised to minus m will be equal to 1 upon a raised to m. Okay students, अगर माइनस रहेगा तो a जाएगा डिनोमिनेटर में, बिकॉज इट्स आंसर विल गो इन डिनोमिनेटर विच विल बी 1 upon a raised to m. So students, now see, a raised to minus m will be equal to 1 upon a raised to m. इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? नाउ इसका एग्जाम्पल है, सपोज 5 raised to minus 3 is given to you all. Okay, 5 raised to minus 3 is given. Its answer will be 1 upon 5 raised to 3. Understood students? अगर लॉस दिया है तो उसको एग्जाम्पल से कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख रहे हैं स्टूडेंट्स. नाउ सिक्स्थ वन लॉ है. व्हाट इज द सिक्स्थ वन लॉ? if a raised to m the whole bracket raised to n will be equal to a raised to m into n. स्टूडेंट्स, अगर a raised to m उसके ब्रैकेट में दिया है n, तो ये जो दोनों है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. दैट मीन्स m raised to n into n it will be students. So one example I will give you all. Okay, which example should I give? I'm just thinking. Okay, it's okay, I will give you 3 raised to 4 the whole raised to 5. now 3 क्या है, a है, m क्या है, 4 है, n क्या है, 5 है. Then how it will be, what was a from here, 3, what was a m from here, 4, into what was a n for here, 5. Understood students how I am doing? Just seeing it and आंसर में जो आएगा वो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, उस तरीके से हमें लिखना है. सो स्टूडेंट्स, 3 raised to 4 into 5 will be 3 raised to 4 5s are 20. That's why its answer is like this. So students, इसलिए दिस होल लॉ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए. दिस होल लॉ यू मस्ट बाय हार्ट इट. वाई? बिकॉज if you by heart it, for example, a raised to m the whole raised to n is equals to a raised to m into n. This is by heart for you. What you will do, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, directly you know the its answer, how you have to write it in this way. Got it? Okay student, we will see further. Further is then seventh law. Seventh law states that a upon b the whole raised to m is equals to a raised to m the whole upon b raised to m. So students, सेवेंथ लॉ अपना है इज a upon b the whole raised to m will be equal to a raised to m the whole upon b raised to m. So students, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ इसको. ओके, पे अटेंशन हियर. एग्जाम्पल सेज दैट सपोज 5 upon 7 the whole raised to 3 is given. ओके, सेम एग्जाम्पल से देख रही हूँ, तो उसका आंसर कैसे रहेगा, 5 upon 3 7 upon 3. Understood students? Now the last law I am talking about, that is the eighth law. Friends, eighth law, what it is saying is, it is saying that a upon b the whole raised to minus m, then a upon b the whole raised to m, sorry, a upon b the whole raised to minus m होगा. अगर माइनस m उसका पावर रहेगा तो
ये क्या हो जाएगा आंसर में, उल्टा हो जाएगा. हाउ, b विल कम अप, a विल कम डाउन. दैट मीन्स b अपॉन a विल बी इक्वल होल रेज टू m, क्योंकि क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव m चेंज हो रहा है आंसर में. इसके लिए हमें यहाँ कुछ चेंज करना पड़ेगा. व्हाट वी विल चेंज, b जो डिनोमिनेटर में है वो हम न्यूमरेटर में लेंगे आंसर में, a जो न्यूमरेटर में है वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे आंसर में. सो हाउ इट विल बी लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, a अपॉन b द होल रेज टू माइनस m अगर आया तो आंसर में b अपॉन a द होल रेज टू m आएगा. हाउ, एग्जाम्पल आई एम गिविंग. ओके, एग्जाम्पल इज दैट 5 अपॉन 7 द होल रेज टू -3. ओके, अगर ऐसा आया तो आंसर क्या रहेगा, 7 अपॉन 5 द होल रेज टू 3. ओके स्टूडेंट्स, so this were some basic laws that were given to us students, and now I have taught you all the laws. Once please take a glance of it, just look at it once students, because out of these laws only we are going to solve us further practice sets. Okay, and this was all about the indices part. Okay, now further what I will teach you all is cube root का part. बिकॉज अ लेसन्स नेम इज इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, सो हम इंडाइसिस लर्न करके क्यूब रूट को छोड़ नहीं सकते. वी हैव टू लर्न क्यूब रूट ऑल्सो. सो इंडाइसिस हम लोग को 7th में बताया गया था, इट वॉज टॉट टू अस इन 7th स्टैंडर्ड, बट क्यूब रूट आई विल बी टीचिंग यू नाउ. सो लेट्स गो टू क्यूब रूट वाला पार्ट. ओके, क्यूब रूट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ क्यूब रूट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो दैट क्यूब रूट हेडिंग दिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो दैट व्हाट इज अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? यू ऑल नो दिस. स्क्वायर रूट इज लुक्स लाइक दिस. इस सिंबल को, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज रेडिकल साइन. This symbol is called as radical sign, but whenever we are using this sign we do not call it as radical. We just we say square root. Understood? Now अभी किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट का आंसर मिलने के लिए इसके अंदर कुछ नंबर तो चाहिए. सो आई विल टेक अ नंबर ऑफ 2. सो नाउ आई कैन से स्क्वायर रूट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2. अभी स्क्वायर रूट के बारे में आप थरर हो गए. अभी क्यूब रूट क्या होता है? व्हाट इज अ क्यूब रूट? क्यूब रूट भी होता है एक रूट जो होता है क्यूब. क्यूब मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब? 3 मीन्स क्यूब. ओके, क्यूब मीन्स 3 स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी विल कॉल क्यूब रूट. दिस इज नोन एज क्यूब रूट. कभी भी आपको ऐसा रूट दिखा, रूट के अंदर 3 लिखा है, कभी भी दिखा, एनी टाइम यू सॉ दिस सिंबल, यू विल कॉल इज एज क्यूब रूट. अंडरस्टूड स्टूडेंट? दिस इज अ क्यूब रूट. सो अभी किसका क्यूब रूट? नाउ टू whose square root, whose cube root, how we will understand? We have to write some number in this. Okay, I will write cube root of 2 again. So how I will write? Cube root of 2. So students, now I hope you have understood what is a square root, what is a cube root. So similarly cube root, it सिमिलरली जैसे कि क्यूब रूट है वैसे ही क्या रहेंगे, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, इट विल बी गिवन टू यू ऑल. सो नाउ यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड और गेट कंफ्यूज दैट टीचर क्यूब रूट क्या होता है, व्हाट इज अ क्यूब रूट. यू अंडरस्टूड? 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, 4 लिखा हो तो 4th रूट, 5 लिखा हो तो 5th रूट, लाइक दिस वे इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स. सो अभी हम लोग को इतने सारे रूट नहीं है. व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली क्यूब रूट के बारे में स्टडी करना है. वी हैव टू लर्न ओनली अबाउट क्यूब रूट. नाउ आई विल टीच यू सम बेसिक थिंग्स अबाउट 1/n फॉर्म. 1/n फॉर्म कॉल्ड एज 1/n. 1/n फॉर्म क्या रहता है? नाउ दिस ऑल थिंग्स. ओके, अभी मैंने लिखा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई रोट. नाउ दिस कैंट बी रिटन इन द इंडेक्स फॉर्म. हम लोग इंडाइसेस स्टडी कर रहे हैं. सो इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? हाउ वी विल राइट इट इन द इंडेक्स फॉर्म इज 2 raised to 1/2.
वाई दिस इज, फ्रॉम वेयर दिस नंबर्स केम. 2 आया इधर से, 2 इज रिटन. This is square root. Students, square root means what? 2, right? 2 is known as square root. 3 is known as cube root. Understood? So that's why 1 upon 2 came. Now student, if I would have written like this example, cube root of 2. So अभी index form कैसे आएगा? How it index form will be? Index form will be 2 raised to 1 upon 3. Similarly, 1 upon 4, 1 upon 5, like this way you have to write in your index form. We will further see how it is read, students. But first you understand what is the meaning of square root, what is the meaning of cube root, how it is written in the index form. I hope you are thorough with it. Okay, students. Now further we will go and see how it is read. Okay. So students, this is the index form, 2 raised to 1 by 2. But how it is read in maths language? Okay, this is also 1 upon 3. So how it is read in the maths language? It is read that. Okay, you can read this as square root of 2 also, students. Okay, you can read this as cube root of 2 also. But how you can read some numbers? Some numbers like, example I am giving, 2 raised to 1 upon 7 बताया है. Then how you will read this? You can't call 7th root of 2. No. You are reading this as 7th root of 2. You will be reading this like this way. You will not read 1 by 7th root of 2. You will not read like that. You will read 7th root of 2. Because this is the index form. How it can be written in the general form? It can be written like this. 7 बिकॉज ये क्या है, 7th रूट है 2 का. सो 7th रूट ऑफ 2, लाइक दिस वे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज सम बेसिक थिंग्स. इफ यू वांट आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. हियर आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ 128 द होल रेज टू 1 अपॉन 12 आई विल टेक. ओके, सो हाउ विल बी इट रीड? इट कैन बी रीड एज, ये जो नीचे का पार्ट है, जो टोपी है उसका नीचे का डिनोमिनेटर वो देखने का. 12th रूट ऑफ 12 है, सो 12th root of 128. Isn't it simple, students? How it is read? Is it any difficult thing I am teaching you all? No, it is very easy, students. So now students, till here I think we have complete knowing some basic things about it. What we will do is we will be starting with our practice sets now. So when I will start with practice set, how will a pattern be, students? When you are learning maths with me, I will give you some pattern. That is, practice set जब भी मैं start करूँगी, okay, some of the difficult question I will be solving it along with some of the easy question as well. But I will be giving you some homeworks also, because मेरे साथ अब मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द होमवर्क. व्हाई टीचर इज टेलिंग लाइक दिस वे? बिकॉज मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिसिंग, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल रियलाइज यू लर्न मैथ्स. सो स्टूडेंट्स, that's why homework is compulsory for all. You have to do the homework. So what I will do, if 6 sums are there, 3 I will do, 3 will be for your homework. Understood, students? So equal होना चाहिए. Okay, some students will say टीचर कम करती है, हम लोग को ज़्यादा होमवर्क देती है. So ऐसा नहीं होना चाहिए. What it must be that टीचर और स्टूडेंट्स इक्वली लर्न करेंगे एक साथ. Okay, so now we will be starting with the practice set. That is practice set 3.1. Students, I want everyone to remove your textbook and notebook as I am solving the sum. Please learn it and write it, students. I want your notebooks to get completed. Okay. So now, reading the question. Express the following numbers in the index form. This is the first question. What is the question? Express the following numbers in the index form. उन्होंने क्या बोला है? जो उन्होंने दिया है क्वेश्चन, उसको हम लोग को इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस करना है मतलब क्या? सिर्फ बोलना है क्या? नहीं, लिखना है मैथ्स में. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स. कौन से नंबर्स है? 5th रूट ऑफ 13, 6th रूट ऑफ 9 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, जो भी नंबर्स दिए हम लोग को क्या करना है? इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे?
Now let's see. First is the fifth root of 13. This is a question. Now how we will write its answer? So students, how we will write? Fifth root है, right? So 13 1 by 5. Understood how it is written? Fifth root of 13. बेसिक जब हम बेसिक लर्न कर रहे थे, दैट टाइम आई शोड यू हाउ इट इज रीड. So now what they have given us, they have given us already how it is read, and they are asking us to write it in index form. Only this much is your answer, student. Understood? Now we will solve one more sum. You will be understanding very good when I solve some sums further. So sixth root of 9. Sixth root of 9 बोला है. How we will write? Of 9, so 9 I will write first. Sixth root, so 1 by 6. Understood? Again I will solve the third one also, students. Square root. Now this is very good and easy for you all, right? Square root of 256. Students, अभी square root of 256 देख के some of the students what they will do is they will write it like this way. Square root 256. This is wrong. Because why? This is not index form. This is not index form, students. ये wrong है. How you will write it? You will write 256. Square root means what? Square means 2. So 1 by 2. Understood, students? Any doubt in this? If you want, I will be solving further sums also. Fourth one also I will solve. That is a cube root. अभी cube root बोला है. Now my students know what is the meaning of cube root. So how we will write it as? Some of the student will write like this way. टीचर ने cube root बोला है तो cube root ऐसे लिखने का. This is wrong, students, because टीचर ने ऐसा बताया है, but in the question they are asking us the index form. और index form ऐसा रहता है क्या? नहीं. How it is? Cube root of 17. Cube means 3. Of whom 17. So 17 को पहले लिखेंगे. Cube root of 17 बोला है तो क्यूब मतलब 3, दैट मीन्स 1/3. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ फिफ्थ है एट्थ रूट ऑफ 100 और सिक्स्थ है सेवेंथ रूट ऑफ 30. दिस बोथ मार्क फॉर योर होमवर्क. आई वॉन्ट यू ऑल टू डू योर होमवर्क फ्रॉम द वेरी फर्स्ट lecture itself. So homework, okay, as teacher is marking, you will have to mark it for your homework also, students. Now what we will do, we will see the second question. होमवर्क के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ओके पीछे भी आप कर सकते हो, ओके, बट करना ही है होमवर्क. ओके, नाउ सेकेंड वन क्या बोला है? राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ e. मतलब क्या? यहाँ पे जैसे ये फॉर्म दिया था वैसे ही हम लोग को लिखना है. दे आर गिविंग नाउ नंबर्स फॉर्म. व्हाट यू हैव टू राइट लाइक दिस फॉर्म. हियर दे गिव लाइक दिस फॉर्म, वी रोट इट इन नंबर्स, राइट? Now what they are giving, numbers को दिया है, we will write it in the word form. How we will write it? First one क्या दिया है हम लोग को? 81 the whole raised to 1/4. Now how we will write it? We will write, अभी 1/4 है मतलब इसको कैसे रीड करेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 81. So how we will write? We will write फोर्थ. स्टूडेंट स्पेलिंग में लिखना है, ओके? फोर्थ root of 81. Any doubt, students? Okay, now we will see further with the second sum. Second sum क्या बोल रहा है हम लोग को? 49 है, okay? 49 is given, 1/2 is given. Okay, now how we will write it? How we will write? 1/2 is given, right? Means what? 1/2 को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं. So स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्टूडेंट्स? 49 का. सो 49. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एनी डाउट? प्लीज टेल मी. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू सम मोर होमवर्क, दैट इज थर्ड वन, फोर्थ वन एंड सिक्स्थ वन. फिफ्थ वन I will solve here. Okay, so I want you to do third, fourth and sixth. Now fifth one I will be doing. Okay, so fifth one क्या बोला है हम लोग को? फिफ्थ वन
100 अपॉन 1/19। अभी बहुत बड़ा बड़ा नंबर है तो सब बच्चे डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जब रिया टीचर है यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। वाई? बिकॉज एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। जैसे पढ़ा है उसी मेथड पे ध्यान देने का, इधर उधर नहीं देखने का। व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस? जस्ट नंबर्स आर गिवन, कांट यू राइट इट इन वर्ड्स? अभी 1/19 दिया है, मतलब क्या? 19th रूट ऑफ 100। अभी एक बार पढ़ना आ गया तो अभी लिख भी सकते हैं 19th रूट ऑफ 100। देन हाउ वी विल राइट इट एज 19th रूट ऑफ 100। ओके 100। ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट? 19th root of 100. Okay, so here we are ending our lecture today. Okay, एक practice set some teacher has done. Some of them some are there for your homework. I hope you will do your homework and send me as you do. Okay, take care students. Bye bye. We will meet in the next lecture with our next practice set. We will try to finish the lesson. Thank you students.